ہائی ایوری ون، گڈ آفٹرنون اینڈ السلام علیکم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ. ناظرین، اتوار کے دن جون کی 6 تاریخ کو کینیڈا کے شہر لنڈن میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا. نہ صرف کینیڈا میں رہنے والے مسلمان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس واقعے کو دیکھ کر غم و غصے کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا. اور نہ صرف دنیا کے مسلمانوں نے بلکہ جو لیڈرشپ ہے کینیڈا کی پولیٹیکل لیڈرشپ، وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو صاحب سے لے کے اپوزیشن پارٹیز کے تمام لیڈرز اور کمیونٹی اور دیگر فیتھ کے جو لیڈرز ہیں، سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ اسلاموفوبیا ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے سد باب کے لیے ہم سب کو مل کے کھڑا ہونا پڑے گا. لنڈن آنٹیریو میں سنڈے کے دن شام کو واک کرنے جانے والی فیملی، پاکستانی فیملی، مسلم فیملی، ایک ہی فیملی کے 4 لوگوں کی جانیں لے لی گئیں. 20 سالہ شخص نے اپنے ٹرک جان بوجھ کے گاڑی کو ان کے اوپر چلا دیا، کیوں کہ وہ مسلمان تھے. اور یہی بات پولیس نے بتائی اور یہی بات جو ہے وہ ہمیں پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی بتائی. آج کے اس شو میں ناظرین ہم اس حوالے سے بات کریں گے، آپ کو تھوڑی سی تفصیلات دیں گے کہ لنڈن میں یہ جو فیملی تھی سلمان افضال صاحب کی، ان کی وائف، ان کی بیٹی، ان کی والدہ اس واقعے میں جاں بحق ہو گئیں. اور اس واقعے کو وزیر اعظم جناب جسٹن ٹروڈو صاحب نے دہشت گردی کا واقعہ کہا. اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اسلاموفوبیا بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن ہمارے پاس وقت کی قلت. ہماری کوشش ہوگی کہ سمرائز انداز میں اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ بات کریں. ہم میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں جناب فیصل ممتاز صاحب، جو کینیڈین آف پاکستانی اوریجن کمیونٹی اور کینیڈین مسلم کمیونٹی کے ایکٹیو ممبر ہیں. ان کے ساتھ موجود ہوں گے عظمت مجیب صاحب، جو لبرل پارٹی آف انٹیریو پکرنگ ایکسپریس کی رائڈنگ کے پریزیڈنٹ ہیں اور میڈیا پرسن ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ موجود ہوں گی جناب ثنا یاسر صاحبہ، جو کہ لنڈن انٹیریو میں رہتی ہیں اور انہوں نے یہ گو فنڈ می کیمپین لانچ کی، جس کے تحت 500,000 سے زیادہ پیسے جمع کیے جا چکے ہیں. آپ کے ان سوالات کے بھی جوابات دیں گے کہ یہ کتنی لیجٹ کیمپین ہے. ثنا صاحبہ ہمیں کیا بتائیں گی فیملی کے حوالے سے، اور کیا یہ فیملی کی اپرووڈ کیمپین ہے، اور کیا آپ اس میں پیسے دیں گے تو اس کا جو ہے وہ مصرف کیا ہوگا، کس طرح سے پیسوں کا استعمال ہوگا. ناظرین، اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا آغاز کروں. آئیے سب سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں کہ کینیڈین وزیر اعظم جناب جسٹن ٹروڈو صاحب نے پارلیمنٹ میں ہاؤس آف کامن میں بات کرتے ہوئے اپنے تعزیتی بیان میں اس واقعے کو ایکٹ آف ٹیررزم کہا اور کس طرح سے انہوں نے ڈسکرائب کیا اور کینیڈینز کو اس واقعے کے حوالے سے بتایا. Lately, a lot of Canadians have been enjoying evening walks to get a bit of fresh air after long days at home during this pandemic. On Sunday in London, Ontario, that's what a grandmother, 2 parents, and 2 children went out to do. 3 generations of the Afzul family: Salman, Madia, their children Yumna and Fayaz, and their grandmother. But unlike every other night, that family never made it home. Their lives were taken in a brutal, cowardly, and brazen act of violence. This killing was no accident. This was a terrorist attack motivated by hatred in the heart of one of our communities. Mr. Speaker, if anyone thinks racism and hatred don't exist in this country, I ask to them this: how do we explain such violence to that child in hospital? How can we look families in the eye and say Islamophobia isn't real? ناظرین، آپ نے دیکھا وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو صاحب نے کس طرح سے اس واقعے کو ڈسکرائب کیا اور دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ثنا آپ سے. آپ اسی اسٹریٹ پر رہتی ہیں جہاں پہ سلمان افضال صاحب اور ان کی فیملی رہا کرتی تھی، اور انتہائی افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا. جتنا اس پہ افسوس یا غم بنایا جائے اتنا کم ہے. تو آپ ہمیں کیا بتائیں گی اس فیملی کے حوالے سے، کیسی فیملی تھی اور اس وقت جو ہے وہ کیا صورتحال ہے؟ Assalamu alaikum. Thank you for having me. We were very close family friends with Salman uncle and his family. We just lived up the street from them. So almost every day we would see them as they would walk around evening time with the whole family. So when we were walking or if we were driving, we would always see them. And they were a very loving, caring, and genuine family that always had a smile on their faces. And they always wanted the best for the people around them. And you can only say good words about this family, as they were so
loved in the community. And the Pakistani community here in London and the Muslim community here in London, they are mourning the loss of this horrific event here in London. We have the family here, the extended family, they are also in shock as they have driven from Ottawa and Milton and nearby to be with the young boy who still remains in hospital. And we just have to pray for this family that Allah subhanahu wa ta'ala grants them sabr and grants the family Jannat al-Firdaus. And for Faiz, who his life will not be the same anymore, but it is good to know that he has immediate family and that he will be in good hands. Inshallah, and absolutely, I mean, the entire community is in shock, not just the Canadian Muslim community, but the Canadians in general. And we also saw Prime Minister Justin Trudeau and all the party leaders, political leaders and other leaders also participated in the vigil, which took place on Tuesday, June the 8th. So how the event went in London when the vigil was taking place on Tuesday? Alhamdulillah, it was a very, very successful event that we had here outside of our London Muslim Mosque. The family was very well known, as Uncle Salman would pray all his 5 prayers here at the mosque, and he would also force his former neighbor to come and pray with him at the mosque. So they were well known, and the young Yumna, she just graduated last year here from the London Islamic School, and she had painted a mural in the basement, and she wanted to leave behind a legacy. So subhanAllah, it is crazy to think, but it is a beautiful memory of Yumna, and her mother had helped her as well paint that. So it is a beautiful memory of them that will be in our masjids for years to come. And it was a very successful event. The political leaders have addressed this as a terrorist attack, and they are willing and will be looking into it, and they do want to make changes to what is going on here in London, and they do assure that we Muslims are not alone, and that they are with us during this time, and that they will do whatever it takes to protect us. Yeah, thank you, Sana, for sharing some of that information. And I will ask you one more question, but after I speak to other guests here, especially around the GoFundMe campaign that you launched. People have lots of questions about it, but I will ask you a bit later on. Faisal, I will include you to the conversation. So when we look at this incident, and it's not the first one, right? We have seen many others in the past, and God forbid more might come, right? Islamophobia, this subject, some people are thinking, Islamophobia is not real. But we saw Prime Minister said, opposition leader said, everybody is accepting that Islamophobia is real and it exists. How do you see this as an ordinary member of Canadian Muslims or Pakistani community living in Canada? Ji, Assalamu alaikum. First off, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dil tod diya is waqiya ne, not just myself, but for the entire community. So I have to start there. The entire community of Canada. If you look at this issue historically, we have a tendency, hum log kehte hain ki, so-and-so shayad bimar tha, there were mental health issues, and, at some point you have to stop and say ki, ab aap jayein agar pichle 4 saal mein, 4 saal pehle aapko shayad waqiya yaad ho, agar aapko back jayein, wahan pe 6 log shaheed ho gaye the masjid mein namaz padhte huए. Since then, we have had 30 incidents of hate crimes against Muslims in Canada. Or obviously ये वाकया जो आज आपके सामने है कि क्या हो रहा है. So I think it's important. हम लोग कहते हैं कि before you solve a problem, you have to first acknowledge the problem. And I acknowledge today कि Islamophobia exists. हम लोग Canada, मुझे यहाँ पे 20 साल हो गए हैं, मेरे बच्चे यहाँ बड़े हुए हैं, दोनों यहाँ पैदा हुए हैं. लेकिन I had to have a difficult conversation with my children कि ये क्यों हुआ, हम मुसलमान हैं इसलिए हुआ है, and explain that to them and help them process it. और साथ साथ में फिर ये भी सुनना पड़ा कि ये लोग हमें terrorist कहते हैं. And these are the things that the youth that we are raising are dealing with and bringing up. So Islamophobia is real, it exists, and I think until we acknowledge that as a society, we can't move beyond that.
and raise our voices against this with the new बिल्कुल। social consciousness that we have. बिल्कुल ठीक है, इस हवाले से भी बात करूंगा आपसे थोड़ा आगे चल के कि व्हाट इज़ एट स्टेक, और हम एज एन ऑर्डिनरी पीपल लिविंग इन कनाडा, लिविंग इन ओंटारियो, हम किस तरह से जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि हम इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या इस चीज़ की सद्देबाप के लिए कुछ ना कुछ अपने लेवल के ऊपर काम कर सकें। लेकिन मैं बात करूंगा अजमत मुजीब साहब आपसे, आप ईस्ट एंड में रहते हैं, एजेक्स पिकरिंग के इलाके में आप हैं जो टोरंटो का ईस्ट एंड है, और आप भी कम्युनिटी में कई हवालों से जाने जाते हैं और आप इन्वॉल्व भी हैं, इंगेज भी हैं। तो उस हवाले से ये बताइए कि वहाँ पे रहने वालों के जज्बात इस वक्त क्या हैं, गो के वाक़या उनसे 3-4 घंटे दूर पेश आया है लंदन ओंटारियो के इलाके में। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। बात यह है कि ये जो वाक़या हुआ है, इससे जो भी फ़र्द है किसी भी कम्युनिटी या मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अफसोस कर रहा है और ग्रीफ में है। ये बड़ी शॉकिंग जो है वो न्यूज़ थी और बड़ा शॉकिंग वाक़या है। और यू नो whenever you talk to anybody, non-Muslim or anybody, they say this is not Canada and this is not real, but this actually happened. Now, बात ये है कि अब जो पाकिस्तानी है या मुस्लिम है, मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि क्या मैं बाहर निकलूँ और मैं वॉक करूँ अपनी फैमिली के साथ, तो क्या मैं सेफ़ हूँ? ये वाक़या किसी के साथ भी हो सकता है। और इस्लामिक फोबिया डू एग्जिस्ट, ये एक वेरी वेरी क्लियर एग्जांपल है। अगर इस्लामिक फोबिया नहीं हो तो ये एग्जांपल हमारे सामने नहीं हो, ये वाक़या ना हो। तो इस्लामिक फोबिया एंड रेसिज्म डू एग्जिस्ट इन कनाडा। और जैसा कि आपने पता है, एक बड़े पॉलिटिकल लीडर ने ये अपना स्टेटमेंट दिया है, और वो बहुत तशवीशनाक स्टेटमेंट है कि मुस्लिम जो है वो कनाडा में सेफ नहीं है। तो ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल जो है ना इस वक्त चल रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ख़तरनाक सूरत हाल है, और अगर लीडर ऑफ द कंट्री इसको एक्सेप्ट करे कि इस्लामोफोबिया एग्जिस्ट करता है और ये जो एक्ट हुआ है लंदन में, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, तो अब जो है वो ज़ाहिर है आपके और मेरे सबके जहनों में यही सवाल आते हैं कि अब समर के महीने हैं और बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। आप जो है वो गली के कोने पे भी ट्रैफिक लाइट होती है, वहाँ पे आप खड़े होते हुए अब लोग डर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वेपन इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पे गाड़ी जो है वो वेपन बना दी गई। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो अपोजिशन लीडर हैं एरन ओटूल, कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के। उन्होंने अपने ताज़ियती पैगाम में ये कहा कि फ्रीडम ऑफ वर्शिप के लिए फ्रीडम ऑफ फियर का होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ बेसिक राइट फॉर एनी कैनेडियन बट सीम्स लाइक इट्स बिट ऑफ ए फॉल्स प्रॉमिस विद कैनेडियन मुस्लिम। आइए उनकी स्टेटमेंट देखें, और नाज़रीन इसके बाद हमें क्विक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके वो सवालात जो आपके टॉप ऑफ माइंड हैं उनके जवाबात आपको देंगे कि जो गो फंड मी कैंपेन लॉन्च की गई सना साहिबा की तरफ से, या एक आध कैंपेन्स आपको और नज़र आ रही हैं, तो ये कितनी लेजिट हैं, और अगर आप इसमें पैसा दे रहे हैं तो उसका मसरफ क्या होगा, और क्या वो फैमिली की अप्रूव्ड कैंपेन्स हैं या नहीं। ब्रेक के बाद भी नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। Freedom to worship can't exist without freedom from fear. And every Canadian has a right to that. That is a basic promise of this country. It's something that comes from just putting your feet on the ground here. It's felt like a bit of a false promise lately to Muslim Canadians. And a horrible attack like this shows us why. But this country has always said that it can do better, but today we must pledge that it will do better. हमारा रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और अदम बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर। कनाडा सरमायाकारी के लिए जन्नत। टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में, ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा,
किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398। सैयद टीम, कोस्ट टू कोस्ट रियल एस्टेट विद रॉयल स्टार रियल। नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन आज हम बात कर रहे हैं लंदन ओंटारियो कनाडा का शहर जो टोरंटो से 2 घंटे की मुसाफत पे वाक़ है, वहाँ पे होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े जिसके नतीजे में एक ही पाकिस्तानी फैमिली के 4 अफराद की जान चली गई, उस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक बहुत बड़ा है इस्लामोफोबिया और हेट के हवाले से, लेकिन वक्त की किल्लत के बाइस हमारी कोशिश होती है कि जितना समराइज वे में हम आपसे बात कर सकें वो कर लें। सना, आपकी तरफ आऊँगा कि जो गो फंड मी कैंपेन आपने लॉन्च की जिसमें अब गालिबन जो है वो $500,000 से ज़्यादा की रकम जमा की जा चुकी है, लोग सवाल ये उठा रहे हैं, दे वांट टू आस्क एंड दे वांट टू नो इफ़ दिस कैंपेन इज़ अप्रूव्ड बाय द फैमिली ऑफ जो है वो जो मरहूम हैं सलमान अफजाल साहब, इज़ इट अप्रूव्ड बाय देम एंड व्हाट वुड बी द यूज़ ऑफ द फंड्स दैट यू आर कलेक्टिंग? Yes, so I am the original creator of the GoFundMe page. As of right now, there is only one GoFundMe page, and we have collected $500,000. I am in close contact with the family members. I have just spoken to them, and they are aware of my name, who I am, and that I am the creator of the GoFundMe. There was confusion going around that there is more than one campaign. And there is 2 legit campaigns, 2 asli wale hain campaigns. Either ek London jo that I created, right, and one in the United States created by the niece of the Salman family. So one is internationally based, and that was Launch Good, and Islamic Relief has given approval and have joined with the Launch Good page in the States, and that her name is Amina. So that one is also real, and then we have created one locally that has blown up and is going worldwide. So this one also is approved by the family. It is approved by the London Muslim Mosque. They are aware, and it also has been approved by London Islamic Relief. All representatives know who I am, and the intentions behind this GoFundMe page, and that they can say that yes, these two donation pages are for the family, and the money will be given to the family. The family, however, stated that they do not need funeral costs, and so if people did want to donate, the money used for the GoFundMe will be used for Sadaqah Jariyah purposes. We are not sure where the money will be donated, what charity or organization. That is in the hands of the family. As of right now, they have not decided of where, but once the GoFundMe page will be completed, I am in close contact with the niece who lives in Ottawa, of the Salman family, and she will be given the money, and then she will release a statement of how they are looking to distribute the money, whether they are going to use it for 5 or they're going to use it in terms of Sadaqah Jariyah. So it is up to them at the end of the day of how they want to spend it. बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच सना फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एज वेल। स्पेशल आई विल कम बैक टू यू। और जैसे मैंने ब्रेक से पहले जाने से पहले कहा था कि अगर हम इंडिविजुअली अपने आप को देखें, व्हाट कैन यू एंड आई डू, यू नो, लिविंग इन कनाडा, हाउ कैन वी टर्न थिंग्स अराउंड। ऑब्वियसली पॉलिटिकल लीडरशिप अपने तौर पे काम कर रही है, कम्युनिटी लीडर्स अपने तौर पे काम कर रहे हैं और करेंगे, और बहुत कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन अवामी सतह के ऊपर मैं और आप क्या कर सकते हैं? जी, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू एक्नॉलेज the role that different forums play and why hate arises. Nafrat koi paida nahi hota nafrat ke saath. Nafrat is instilled in us. It's a lack of understanding of the other. It's a fear of the other
that causes us to behave this way, just as a human race. And I think understanding that it's important कि हम लोग engage करें. This is, this is an opportunity for us to engage with those who don't understand us. जो शरिया का नाम सुन के जो ये कहते हैं कि ये लोग वहाँ से आए हैं और ये करना चाह रहे हैं, जो हमें देख के कहते हैं कि ये हिजाब पहन रहे हैं और ये अपनी ख़वातीन के साथ गलत सलूक करते हैं. These are the impressions that people have of us, and I think the way to address it is, of course, there's a political discourse. Azmat Bhai is more qualified to talk about that. Lekin as people, social media plays a big role in this. हम लोग कभी मैं अपने बच्चों को वाक़या देता हूँ, जब फ़लस्तीन और इज़राइल मैं रिसेंटली न्यूज़ में था तो मेरे बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि वी वांट टू गो टू दिस प्रोटेस्ट. एंड मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उनको पता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे on the other side of the world. But this is the world we now live in. We are consuming information in a different way. And every one of us, na sirf aap, na sirf main, every one of us has a responsibility and an opportunity to speak up when we see this nafrat. And I just want to add one more thing to that, that, before we point the finger at others, or कहना कि ये हमसे डर रहे हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं और Islamophobia है, it is also important that we understand and look inward. कि हम में कितनी नफरत है, and what are we doing to address some of that same hate that we are experiencing today. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल भाई. और नाज़रीन, आपको यहाँ पे मैं एक और क्लिप दिखाना चाहूँगा. जगमीत सिंह साहब जो कनाडा में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP के लीडर हैं, उन्होंने जो है वो अपने ताज़ाती पैगाम में क्या कहा कि मुस्लिम्स आर नॉट सेफ इन कनाडा. आइए उनकी स्टेटमेंट भी सुनते हैं. The reality is our Canada is a place of racism, of violence, of genocide of indigenous people, and our Canada is a place where Muslims aren't safe. They aren't. They aren't safe. Muslims are not safe in this country. And Muslims wonder, I've spoken to people, they wonder how many more lives will it take? How many more families will be mauled down the street? How many more families will be killed before we do something? Innocent people were killed while praying in a place of prayer, in a masjid, in a mosque in Quebec, gunned down. A man was a Muslim man in Toronto was knifed and killed. And both of those incidents, we know very clearly that it was directly because of hate. It was because of hate. There was so much hate towards someone that they did not know, just because of who they were, because of how they prayed, because of what they looked like. अज़मत साहब, क्लोजिंग में आपकी तरफ आऊँगा कि इसमें हमने बात की, फैसल साहब ने भी कहा, सना ने भी कहा कि हमारा क्या रोल होना चाहिए. आपने जगमीत सिंह साहब की भी स्टेटमेंट सुनी, एरन ओटूल साहब की भी स्टेटमेंट सुनी, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी सुनी. बज़ाहिर लगता ये है कि सारे लोग इस पे एग्री हैं कि ये इशू मौजूद है. लेकिन आपके अपने एक्सपीरियंस में आपको लगता है कि ये हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद कार्रवाई आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो जाएगी और फिर किसी खुदा न खास्ता अगले वाक़ये पे फिर ये स्टेटमेंट्स फिर आना शुरू हो जाएंगी पॉलिटिकल लीडर्स की? देखिए वैसा बात यह है कि सारी बातें आपने सुनी. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुस्लिम लाइव्स मैटर सेम एज दी अदर पीपल लाइव्स मैटर. और ये जो है दिस हैज़ टू बी स्टॉप, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल. और ये जो मामला है अब ये ग्रास रूट बहुत हो गया, एजुकेशन हो गई, हमने मुसलमानों ने बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर. इस्लामी फोबिया आज से नहीं, बहुत अरसे से चला आ रहा है. सब अपना अपना जो है ना वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं. लेकिन अब ज़रूरत ये है कि हमें ग्रास रूट लेवल के ऊपर कैनेडियन सिस्टम के अंदर अवेयरनेस देनी चाहिए. स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, प्रीचिंग, और जितने भी रिलीजियस सेंटर्स हैं, हमारे जो इस्लामिक लीडर्स हैं, उनको ये ऑब्लिगेशन होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो प्रीच करें, दूसरे कल्चर्स के मुताबिक, दूसरे रिलीजन जो होते हैं उसके लिए बताएं कि कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और क्या है. जैसा कि फैसल साहब ने कहा कि नफरत लेके हम पैदा नहीं होते. जब एक एजुकेशन मिलती है और एक बच्चा जब बड़ा होता है, उसके दिमाग में क्या ड्रिल किया जा रहा है, उसको एजुकेशन कैसे मिल रही है, जब उसका दिमाग मासूम होता है, तो ये वहाँ से जो है चीज़ें जो है वो हमें उस लेवल के ऊपर ले जानी पड़ेंगी. जैसे ब्लैक लाइव मैटर्स है, सिटी लेवल के ऊपर उसकी कमेटीज बनी हुई, हमें भी उन कमेटीज के अंदर जाके इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी. और ये जो मामला है मुस्लिम लाइव मैटर्स, इस्लामी फोबिया, इसको रेस करना पड़ेगा और उसी लेवल के ऊपर जाके हमें काम करना पड़ेगा. एंड वी हैव टू वर्क विद अदर कम्युनिटीज एंड बिल्ड द ब्रिजेस अमंग द कम्युनिटीज. बिल्कुल ठीक है. अज़मत साहब बहुत शुक्रिया, फैसल साहब एंड सना, थैंक यू ऑल 3 of you for giving us your time this afternoon.
جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا, بیچ میں بھی کہا کہ سبجیکٹ از ٹو بگ but time is always a challenge, but this conversation will continue. And as you heard کہ ہمیں ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پہ جس کو اللہ نے جو صلاحیت ہے, جس چیز کا جو ہے وہ ذمہ دار بنایا ہے, we have to play our part. اور اسی دعا پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیملی کی مشکل کو آسان فرمائے. جو بچہ ہاسپٹل میں ہے وہ جلد ریکور ہو, اور جو لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اور اسی طرح کمیونٹی کو متحد رکھے. اور اب کی بار جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اس چیز کو ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں, ہوپ فلی کہ عملی طور پر ایسے اقدامات اٹھائے جائیں کہ نہ صرف مسلمان کمیونٹی بلکہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا, کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ان مشکلات کا شکار نہ کینیڈا میں ہو نہ دنیا کے کسی اور حصے میں ہو. ناظرین, اپنے ہوسٹ اویس اقبال کو دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت. ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں اوٹوا, برامپٹن, مسیساگا, کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل. آپ کمرشل, ریزیڈنشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے. لندن, ساؤتھ ایشیا, فار ایسٹ, مڈل ایسٹ, یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید ٹیم کو کال کیجیے 613-276-0398. سید ٹیم, کوسٹ ٹو کوسٹ ریئل اسٹیٹ ود رائل اسٹار ریئلٹی.